Palki Jain from Within and Online. And if you haven't subscribed to our channel, then consider it right now. Now, in this concept class 2, we are going to study about yet another fundamental topic, and that is number 1. What is the difference between element, molecules, and compounds? So, we know about these terms, but sometimes we fail to identify the difference between them, but not now. Second is learning atomic number. So there are so many elements present in modern periodic table, but as of now it is very difficult for us to learn and understand all of them. So what I have done is I have categorized the atomic number from 1 to 20, which are very much important for your chemistry class 10 CBSE. Okay, and I have also given you the trick in order to learn and understand them. I have also shared how we can do the electronic configuration and how the valencies are made. Now, the next is making the formulas. So suppose you have a compound ferrous sulfate and you don't know how to make the formula of it. So after learning the atomic numbers and the valencies, you can actually make the formulas of any of the compound. So the third highlight of this session will make you understand how to make the formulas of any of the compounds. Next is understanding that there are various elements which exhibit more than one valency. So we will get to know what are those elements which exhibit more than one valencies, and also we are going to understand some of the most important valencies that is to be used throughout the chemistry. So let's start with it. So as discussed in concept class 1, every matter and every living or non-living thing is basically made up of atom. Now we need to understand that how these atoms actually organize themselves in order to form elements, molecules and compounds. Okay, so first of all we start with elements. So one thing we need to understand about element is that they are pure. Okay, so element are pure, that is they are made up of only and only one type of atoms. Okay, so suppose I take an example of this iron nail. Okay, now this iron nail will be made up of atoms. So whatever the smallest particle will be here will be actually the atoms of iron. Even if I break them into millions of pieces, the smallest part which I will be getting will be actually the iron atom only. So there will be no other atom, it will be pure iron. Now if I consider this gold, and this gold is pure, so every particle of this gold will be only gold atom. Okay, so it will be only gold atom here. Okay, now the atoms of every element is unique. So the atoms of iron will be entirely different to the atoms of gold. So we can say for every atom the chemical makeup, size and mass will be different. So the atom of iron will be entirely different to the atom of gold. In fact, we would say that every element has its own fingerprint that makes it unique. Now there are total 118 elements present. So in order to represent them, we actually make use of symbols. Now I am going to tell you how we write the symbols for every element. Now suppose you consider an element which is oxygen. Write this oxygen in terms of symbol, we make use of letter O. Okay. Now suppose you need to write hydrogen. Okay. Now what is the symbol of hydrogen? It is H, capital H. Okay. Some elements are represented by two letters also, like aluminium. So you have aluminium here and you have to represent it with the help of symbol. So its symbol will be capital A and small l. So it's not always that you use only one letter. Sometimes you also use double letters in which the first letter is a capital letter whereas the second letter is the small letter. Now suppose you need to represent nickel. So again its symbol is capital N and small I. Now symbols names do not always match to the letters in the element. Sometimes they are totally different. For example, if I talk about iron, so iron is IRON, whereas its symbol is capital F
and small e, which is actually not matched with the spelling of iron. Similarly, we also have gold, and its symbol is capital A and small u. So after few minutes you will be understanding more of the elements, their symbols, their atomic numbers and valencies. For now, let me tell you something special about elements. So elements are just like people. Okay, so we categorize people as some people are introvert, they are very shy, whereas some people are very amiable. Okay, they love to roam about with people. So एलिमेंट्स के साथ भी ऐसे ही है. एलिमेंट्स क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स तो दे आर वेरी शाय, वो बहुत शर्माते हैं, दैट इज व्हाई दे लव टू बी अलोन, वेयरएज सम एलिमेंट्स दे आर एक्चुअली वेरी फ्रेंडली. तो वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वो दूसरे एलिमेंट से भी मिले एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स. अगर हम बात करते हैं नियॉन, हीलियम, तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, और कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, दे लव टू बी इन पेयर्स. ओके, अभी कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जिनको आप कभी भी नहीं देखोगे कि वो सिंगल हैं, दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन हमेशा हमें H2 दिखाई देता है. सिमिलरली ऑक्सीजन, अगेन इट इज O2, and nitrogen, again it is N2. Okay, they are always found in pairs. Now again we have fluorine, chlorine, bromine and iodine. So basically there are 7 of these elements who are always found in pairs. So since they are made up of 2 atoms, so that is why we call them diatomic. Okay, di means 2, atomic means atom. Now I need to introduce one another word, and that word is molecule. Okay, so what is molecule? Actually, when 2 or more atoms of elements are joined together by bond, then we say that molecule is formed. So basically here if you see, there are 2 atoms of hydrogen joined, and here it is 2 atoms of oxygen joined. Here it is 2 atoms of nitrogen joined. Here 2 atoms of fluorine joined, and so on. So we will call them as diatomic molecule. And these are some of the simplest molecule present, right? Now if you see here, they are made up of same kind of atoms, right? This hydrogen molecule is made up of 2 hydrogen atoms. This oxygen is made up of 2 oxygen atoms, right? Similarly here with nitrogen, fluorine, chlorine, bromine and iodine. That is why we can also say them that they are diatomic elements, because they are pure and made up of same kind of atoms only. Now it is easier for us to remember that hydrogen, oxygen and nitrogen are diatomic molecules, but sometimes we forget about these elements also. So इसको याद करने का एक तरीका है, फूलों की बहार आई. Okay, फूलो is for fluorine, की is chlorine, bahar bromine, I is iodine. Okay, so now we can remember these diatomic molecules also. Wasn't that nice? So ऐसे करके बहुत से वीडियोस होंगे जिनमें मैं आपको ट्रिक्स दूंगी जिससे कि आप याद कर सको इन सब चीजों को. तो अभी आप जल्दी से देखते हैं what will happen when iron get rusted. Now consider this iron nail. So as I told you, initially it was pure iron nail. That is why every atom out here was all iron atom only. There was no other atom besides iron atom. अभी क्या हुआ? We have exposed this iron nail to water and oxygen. So what do you think will happen? This iron nail will start to corrode. Okay, it will start to rust, right? When it will start to rust, what will happen is इसके ऊपर एक layer आ जाएगी, किसकी? Rust की layer. Okay, and वो rust की layer किससे बनी हुई है? Iron से और oxygen से. यही तो हुआ actually. तो यहाँ पे you will find that oxygen atoms are also getting collected on iron nail. Okay, so now this iron nail is no more a pure element because it contains more than one atom. It contains the atom of iron as well as atoms of oxygen. Okay, now let us take an example of a molecule which is ferric oxide, Fe2O3.
Now, why I am calling it as a molecule? Because it is made up of 2 atoms of iron and 3 atoms of oxygen. I know that molecule is basically the combination of atoms of same or different elements. Right now, there may be few students who say that we feel that it is a compound, and they are also correct. So basically, this is a molecule as well as a compound. Now, how is it possible? Molecule is the combination of 2 or more atoms of same or different elements. Okay, whereas compound is the combination of 2 or more atoms of different elements. Okay, so this different is very much important, right? So compound is the combination of atoms of different elements. So here if you see this iron and oxygen, these are different elements, right? So if I have to explain this with the help of Venn diagram, so I can say, suppose this is a molecule. So here you put everything which is a molecule. So you can put oxygen, which is a molecule because it is a combination of 2 oxygen atoms. You can say that water is also a molecule. You can also say that calcium carbonate is also a molecule. But now if I have to specify that what is a compound here, so in case I draw a small circle, and this circle is actually the part of molecule, right? Then I can write here that H2O is a molecule and also a compound because it is made up of 2 different elements. I can also say that calcium carbonate is a molecule and it is also a compound. Okay, so this is basically representing compound. Now tell me one thing, if I talk about ammonia, so will it be a molecule or a compound or both? Yes, it will be both molecule as well as a compound. So it will be both molecule and compound. Very good. Now tell me, if I talk about nitrogen, N2, will it be a molecule or a compound or both? So if you see here, it is made up of 2 atoms, that is why it is a molecule, and these 2 atoms are all same, they are not different, that is why I would say it is only a molecule. So you can say that every compound is a molecule, right? But not all molecules are compound. Now I am 110% sure that you will never confuse element, molecule and compounds. Now let us jump towards the next concept, in which we will study 20 most important elements, their atomic number and also their valencies. Now first of all, let us understand what is electronic configuration. Okay, so we are following the rule of 2n square in order to fill the orbit. So we are having 4 orbits as of now. We have K, L, M, N. Now we need to understand how many electrons can be filled in these shells. Okay, for K shell we have the value of N as 1. For L shell, since it is a second shell, that is why the value of N will be 2. The M shell is the third shell, that is why the value will be 3. The N shell is the fourth shell, and that is why the value of N is 4. Now if you talk about the K shell, so for this the value of N is 1, and that is why it will be 2, 1 whole square, and the value comes out to be 2. It means that the K shell can accommodate maximum of 2 electrons. If we talk about the L shell, so here we need to find out how many maximum electrons can be accommodated by this shell. So we write 2 here, and what will be the value of N for L shell? It will be 2. So we will put 2 here, 2 square, and the value comes out to be 2 square is 4, 4 2s are 8. So L shell can accommodate maximum of 8 electrons. Now M shell, so if I put 2 here, for M the value of N is 3. So if I put 3 here, I will get the value 18. 3 3s are 9, 9 2s are 18. So M shell can accommodate maximum of 18 electrons. Now
talking about the last shell, which is the n shell. For this, the value of n is 4. So we can write 2 and 4 square. So 4 square is 16, 16 to the 32. It means the n shell can accommodate maximum of 32 electron. Now the word of caution. This is very important point. Okay. So the maximum number of electron in the outermost shell of any of the element will be 8. It cannot be more than 8. It can be maximum to maximum 8. Okay. Now this is one of the most important part. So here are the elements जिनके नाम और जिनके एटॉमिक नंबर, सिंबल्स, वैलेंसीज आपके टिप्स में होने चाहिए. ठीक है. तो दीज आर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. ठीक है. अभी क्या है, सबसे पहले हम इनके सिंबल्स लिखेंगे, फिर इनके एटॉमिक नंबर लिखेंगे और फिर ये देखेंगे कि हम कैसे इनको याद कर सकते हैं बहुत ही जल्द. बिकॉज इनको एकदम से पूरी तरीके से याद करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो अगर हमारे पास कोई ट्रिक होगी, वी वुड बी एबल टू लर्न इट वेरी वेल एंड दैट टू वेरी फास्ट. अभी एकदम से साथ में याद कर लेंगे. ठीक है. सो हाइड्रोजन सिंबल इज H. Helium symbol is He. Lithium symbol is Li. Beryllium symbol is Be. Boron symbol is B. Carbon symbol is C. Nitrogen symbol is N, capital N. Oxygen symbol is O. Fluorine symbol is F. Neon symbol is Ne. We've already used N, that is why we are putting Ne. Sodium, it is Na. Magnesium, it is Mg. Aluminium, it is Al. Silicon, it is Si. Phosphorus, it is capital P. Sulfur, capital S. Chlorine, C and small l. Argon, it is capital A and R. Potassium, capital K, and calcium, Ca. Okay, so these are the symbols of these elements, right? Now the atomic number, just write the counting from 1 to 20. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Okay, so we have written the counting, right? So what will be the atomic number of hydrogen? 1. Helium का 2, lithium 3, beryllium 4. अभी क्या प्रॉब्लम है कि इनको हम याद कैसे करें सीक्वेंस वाइज, क्योंकि जब हमें फॉर्मूलेस बनाने होते हैं, सपोज मुझे फॉर्मूला बनाना है सोडियम क्लोराइड, फॉर दैट वी शुड नो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एंड आल्सो क्लोरीन. अभी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि अब कैसे याद करें. तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है. तो ट्रिक क्या है? हा ही लाई बी बकनॉफ नीना मेग अल साइपास कल अर के का. Isn't this easy? बहुत easy है. एक बार दोबारा बोलते हैं. हा ही लाई बी बकनॉफ नीना मेग अल साइपास कल अर के का. फिर से बोलते हैं. हा ही लाई बी, 4 हो गए हमारे. बकनॉफ, इसमें हमने 5 कर लिए. कैसे? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. इसके बाद नीना, नियॉन और सोडियम कर लिया. फिर मेग अल, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम. फिर साई पास, तो क्या हो गया? सिलिकॉन और फास्फोरस सल्फर. कल अर, क्लोरीन, आर्गन, के का, पोटेशियम और कैल्शियम. तो ये बहुत सिंपल है. इसको आप 5-6 बार बोलोगे ना, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. ठीक है, कुछ नहीं करना है. अब क्या करोगे, एग्जाम में जाओगे ना, वैसे तो इतनी बार मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगी इन एलिमेंट्स की कि आपको काफी होगी, तो ऐसे ही याद हो जाएंगे एटॉमिक नंबर. फिर भी आप चाहो तो एग्जाम में जब पहुंचते हो ना, तो ये टेबल बना लेना. सिंपल क्या लिखना है आपको, ये लिख लेना, सिंबल्स लिख लेना और वो काउंटिंग लिख लेना. तो इस तरीके से क्या होगा, आपके एटॉमिक नंबर और सिंबल्स आपके टिप्स पे आ जाएंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा. तो हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, KLMN. इन शेल्स के अकॉर्डिंग हमें
इलेक्ट्रॉन्स को रखने हैं, ठीक है। अब हमें पता है एटॉमिक नंबर किसके इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। और अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ना ही तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं ना ही इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, ठीक है। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में सेट करना है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 1 इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। दैट इज व्हाई सबसे पहले हम k शेल फिल करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन से। ओके, नाउ हीलियम 2, तो k शेल में हमारे मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो k शेल पे हमने मैक्सिमम 2 रख दिए। नेक्स्ट इज लिथियम, दिस इज 3, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है जिन्हें हमें ऑर्बिट्स में लगाने हैं। तो इट विल बी 2, 1, राइट। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, तो हमने L शेल में फिर 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया। उसके बाद बेरिलियम, नाउ इट विल बी 2, 2, सो इसके आउटर मोस्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट इज बोरॉन, दिस इज 5, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2, 3। इजंट इट इजी? कार्बन 2, 4। अब हम ये तब तक कर सकते जब तक हमारे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंचते। नाइट्रोजन 2, 5, ऑक्सीजन 2, 6, फ्लोरीन 2, 7 एंड नियॉन 2, 8, ठीक है। अभी हमने देखा कि हमने इनके L शेल को हम कंप्लीट कर रहे थे। अब जैसे ही हम L शेल पे पहुंच गए 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब नेक्स्ट आ रहा है सोडियम। अब सोडियम कितना है, 11 मतलब 2, 8, 1। हम 2, 9 नहीं कर सकते बिकॉज L शेल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैंने बताया था आपको 2, 8, 16 और 32 ये रहता है ना। तो हमारे L शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, दैट इज व्हाई हम इसको 2, 8, 1 लिखेंगे, ठीक है। वी कैन नॉट पुट 2, 9, राइट। इसको क्या लिखेंगे हम, 2, 8, 2। तो अभी हमारा जो आउटरमोस्ट शेल है वो M शेल बन रहा है। नेक्स्ट इज 2, 8, 3। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलिकॉन। सो व्हाट इज सिलिकॉन? इट विल बी 2 इन द K शेल, 8 L शेल, देन इसके बाद 4, okay, 2 + 8 + 4 will be 14. Now phosphorus it will be 2, 8, 5. Sulfur it will be 2, 8, 6. So basically the total of these should be 16. Now 2, 8, 7. Again total should be 17. Now 2, 8, 8. Okay, here in the M shell we have 8 electrons. Okay, now talking about potassium, so its atomic number is 19. Okay, so if I put 2, 8, it would be 10. If I put 9, so now tell me, will it be okay? No, it is not okay. I told you before that the outermost shell cannot contain more than 8 electrons. So this is wrong configuration. So what we can do is we place 8 here in the M shell and 1 here in the N shell. Okay, this is how we are going to configure. We cannot put 2, 8, 9 because outermost shell cannot contain more than 8 electrons. Similarly, this is calcium 20. So we cannot put 2, 8, 10. This is wrong. Okay, because the last shell cannot contain more than 8 electrons. So what we are going to do is we are going to write 2, 8, 8, 2. In this way we are going to do the electronic configuration. Now let us talk about valency. So valency is the number of electron you need to gain or you need to lose in order to attain the noble gas configuration. Now the question arises that what is noble gas configuration? So every element wants to have its last shell as complete octet. It means it wants to have 8 electrons in its outermost shell, except for helium. If we talk about neon, argon, they have their outermost shell complete. So they are basically noble gases or inert gases. Okay, so why inert? Since their outermost shell is complete, that is why they do not want to react with anyone. Okay, that is why they are inert or noble gases. But exception is helium.
helium has only 2 electrons in the outermost shell and it has only K shell. That is why for helium, having only 2 atoms in the outermost shell makes it stable. Now what happens is, every element wants to become stable. Okay, it wants to have a stable configuration. For this, it either loses or gains electron. So talking about hydrogen, so in order to become stable, hydrogen sometimes lose the electron and become positive 1, and sometimes it gains the electron and have the valency -1. Okay, now you will be asking why +1 and why -1. So understand this way, if you are taking the electron, okay, in that way number of electrons will be more, thus you will be having negative charge, number of protons will be less. If you are losing the electron, it means the number of electron will be less than number of proton. That way positive charge will be dominant, and that is why we denote it with plus sign. Okay, so if you are losing the electron, it means that the number of proton is dominant, and that is why you will be having plus sign. Whereas if you are gaining the electron, it means the number of electrons is more than number of proton, and that is why you will have negative sign, right? So now hydrogen is basically a non-metal, but most of the time it loses the electron and attains +1 valency. But some of the time when it combines with a metal, so it is combining with sodium and is forming sodium hydride. In that way, sodium is very reactive metal, and thus hydrogen here has a valency of -1 and sodium has a valency of +1. Okay, so most of the time hydrogen will behave as cation, means positive, but some of the time it can behave as anion when it is combining with a metal. Okay, now talking about helium. So helium has its outermost shell complete, so it does not even wants to gain electron nor lose electron. That is why its valency is 0. Now lithium. Lithium is 2,1. Now here the outermost shell consists of 1 electron. Okay, now it does not want to have 1 electron because it wants to have its outermost shell complete. Its valency will be +1. Now if we talk about beryllium, so till K shell it was all stable, but because of 2 more electrons here in the L shell, it is not stable. So by losing the 2 electron, it will become stable. So that is why I will put +2. Again, boron, it is 2,3. So it has 3 extra electrons because of which it is not stable. So it will lose 3 electrons in order to become stable. Now carbon. Now carbon has 4 electrons in its outermost shell. So this is very important to understand because you will be having a chapter carbon and its compound in which you will study about carbon in detail. So basically carbon has 4 electrons in the outermost shell. Now in order to become stable, either it accepts 4 electron and have the configuration 2,8. Okay, or it loses 4 electron and have the configuration 2. So for carbon, it is very difficult to accept 4 electrons and to lose 4 electron. In that way, carbon shares the electron. Okay, so maximum time carbon behaves as cation. Okay, now talking about nitrogen. Nitrogen is 2,5. It means it will either lose 5 electron to attain the stable configuration, or it will have to accept 3 electrons. So it will be 2,8 then in order to have the last shell complete. Now accepting 3 electron will be much more easier than losing 5 electrons. That is why it will accept 3 electrons and thus its charge will be -3. So its valency will be -3. Okay, because the number of electrons will be more, and that is why you have negative charge. Similarly, oxygen, it is 2,6. So in order to attain the configuration of 2,8, it will accept 2 electrons, and that is why its valency will be -2. Fluorine, it has to accept only 1 electron in order to complete its outermost shell. That is why its valency is -1. Now talking about neon, so its outermost shell is complete. So neither it will take electron nor it will give electron, and that is why the valency will be 0. Now sodium. Sodium is 2,8,1.
सो 2,8 तक तो वो स्टेबल था, बट 1 आते ही क्या हुआ, वो अनस्टेबल हो गया, तो उसको ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। लूज करना है तो मतलब इलेक्ट्रॉन उससे जाएगा तो नेगेटिव चार्ज कम होएगा और पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे +1। सिमिलरली मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, तो ये क्या होगा +2। एल्यूमिनियम क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और स्टेबल हो जाएगा, 2,8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, इसलिए +3। तो जहां जहां भी लूज करेगा वहां वहां आपको पॉजिटिव रखना है, इट विल फॉर्म कैटायंस। ओके, नाउ सिलिकॉन अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है या गेन करना है। अब वही है कि इसके लिए दोनों डिफिकल्ट है, लूज करना भी डिफिकल्ट है और गेन करना भी डिफिकल्ट है, तो मैक्सिमम टाइम इट विल share the electron, but if it write about valency, so most of the time it shows the valency of positive. Now phosphorus again, अब क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करना तो मुश्किल है ना, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है, तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी क्या होगी, -3। बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन जब वो गेन कर लेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा, है ना, दैट इज व्हाई इट इज -3। सल्फर इज 2,8,6, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसका क्या होगा, -2। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेबल होने के लिए, 2,8 कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए, तो इट विल बी -1। आर्गन, अब इसकी तो आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ना ही तो वो देगा ना ही वो लेगा, सो इट विल बी 0। नाउ पोटेशियम, अब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 और कैल्शियम विल बी +2। आई होप अब आपको वैलेंसी समझ आ गई होगी। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन्स हम देते हैं वहां तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो बन जाते हैं कैटायंस। ओके, और जहां भी हम इलेक्ट्रॉन लेंगे वहां बन जाएगा नेगेटिव चार्ज और हो जाएगा अनायन। ओके, और जहां भी ना तो हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और ना ही दे रहे हैं, वहां पे वैलेंसी क्या होगी, 0। ओके, अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी मल्टीपल होती है, मतलब मोर देन 1 वैलेंसी होती है। Now, some elements exhibit variable valency. So, what is variable valencies? It means they have more than 1 valencies. Okay, more than 1 different valencies. Okay. Now, in your books, name of the formula is in Roman, like iron second oxide, or you must have seen iron third oxide. So I know about myself, when I was in class 10th, I used to get puzzled. What is this iron second oxide and what is this iron third oxide? So let me tell you. What happens is, suppose you have a shell here. Okay, suppose I'm talking about an element that has 3 electrons in the outermost shell. Okay, so the outermost shell is the most active shell, and that is why only the last outermost shell participate in the reaction. But sometime the shell which is just behind the active shell, which is the penultimate shell. Okay, so this is penultimate shell. So sometimes this penultimate shell also participate in reaction. So whenever for any element, the active shell and penultimate shell, both the shell participate in the reaction, at that time those elements exhibit variable valencies. For example, if I talk about iron, if I talk about copper, silver, gold, mercury, tin, lead, phosphorus and sulfur. So these are the elements that exhibit multiple or variable valencies. Let me tick mark all those elements whose valencies are very much important for 10th boards. So if I talk about iron, copper, silver and mercury, so these are 4 most important elements for which you need to learn their valencies. For iron, if I talk about, it has valency +2 and +3. Okay, copper, it exhibits 2 valencies again, which is +1 and +2. Silver, again it exhibits 2 valencies, which is +1 and +2. Mercury, the symbol for mercury is Hg. It also exhibits 2 valencies, and the valencies are
+1 and +2. Okay, so whenever you write the lower valency, for this you make use of suffix and that is us. So suffix क्या होता है? जो भी आप वर्ड के बिल्कुल लास्ट में लिखते हो वो होता है suffix, ठीक है? और जो भी हायर वैलेंसीज होती है उनके लिए ये suffix लगता है एक, ठीक है? सो फेरस अगर +2 वैलेंसी यूज कर रहा है और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, इट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होगा? Fe+2 and oxygen is -2. So they will cancel up and the formula comes out to be FeO. So you won't say it is iron oxide. या तो आप कहेंगे it is iron second oxide, या फिर आप क्या कहोगे इसको? फेरस. तो मैंने क्या यूज किया है इसका सफिक्स? अस. ओके, फेरस ऑक्साइड, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं कॉपर की बात करती हूँ तो कॉपर की भी दो वैलेंसीज है. लोअर वैलेंसी को हम क्या बोलेंगे? अस, और हायर वैलेंसी को क्या बोलेंगे हम? एक, ठीक है? तो अगर मैं कॉपर की हायर वैलेंसी यूज कर रही हूँ तो क्या होगा? कॉपर की हायर वैलेंसी कितनी है? +2, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन अगेन इज -2. तो जब ये कैंसिल आउट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनकर आएगा? कॉपर ऑक्साइड. तो उसको मैं क्या लिखूंगी? या तो मैं लिखूंगी कॉपर सेकेंड ऑक्साइड. व्हाई? बिकॉज कॉपर की कौन सी वैलेंसी यूज हो रही है इसमें? +2 वैलेंसी हो रही है. सो हायर वैलेंसी के लिए सफिक्स क्या होता है? एक. तो मैं क्या लिखूंगी? क्यूप and ik, cupric and then oxide. Now we have considered iron, copper. Let me now take an example of silver. Okay, so silver की suppose हम lower valency use करते हैं. तो अगर हम देखें silver की lower valency कितनी है? It is +1. Okay, now silver is reacting with chlorine. So silver is reacting with chlorine. So silver की lower valency +1, chlorine is -1 and the formula comes out to be silver chloride. Now how you are going to write it? या तो आप लिखेंगे इसको silver 1 chloride, या फिर आप क्या लिखेंगे? argentus. तो सिल्वर का होता है अर्जेन और इसका सफिक्स क्या लगेगा? अस, OUS, अस, क्लोराइड. एक हम मर्करी का भी देख लेते हैं. तो मर्करी की हम लोअर वैलेंसी यूज करते हैं Hg+1 और इट इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, सो O is -2. ओके, सो क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा? Hg2O. ओके, सो इसको क्या कहेंगे हम? मर्क्यूरस. रस क्यों? क्योंकि हम लोग लोअर वैलेंसी यूज कर रहे हैं, तो सफिक्स क्या होगा? अस एंड देन ऑक्साइड. सो अभी हमने 1, 2, 3 एंड 4 एग्जाम्पल्स देखे हैं. आई होप अब आपको वेरिएबल वैलेंसी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ टू मेक फॉर्मुलेज. फॉर दिस मैं उन फॉर्मुलेज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूंगी जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हैव यू सीन समथिंग लाइक दिस? कार्बोनेट CO3 having the charge -2 or hydroxide having the charge -1. Yeah, so till now we have actually studied about pure elements and their charge. Okay, but right now if you see them, they are actually the atoms of different elements combined together as a single unit, right? And they are having charge. Okay, so now these are called radicals. So what are radicals? They are group of atoms of same or different elements combined chemically so that they behave as a single unit and they have either positive or negative charge. So if I talk about carbonate, if I talk about hydroxide or sulfate, right, these all are radicals. So we have positive radicals and negative radicals. So right now we are going to discuss some most important radicals for exam point of view. So talking about positive radicals, ammonium NH4
with the charge +1, and there's long list of negative radicals. So negative radicals include carbonate CO3 with a charge -2, or oxide with the charge -2, sulfate SO4 with the charge -2, and sulfite SO3 -2. Its name is sulfite. Next you have sulfide, and the formula for sulfide is S-. You have acetate CH3COO-, and there are also some important ions which you need to remember, which is bromine -1, iodine -1, and fluorine -1. And hydroxide, you know, it is OH and it is -1. Also you have nitrate. Nitrate is NO3 and its charge is -1. So this is nitrate. And you also have nitride, which is NO2. So apart from those 20 elements we have studied before, you need to know the charges on these radicals also. Okay, there is one more element which is used widely throughout the book, and that is barium. So what is the charge in barium? Barium is +2. अब नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एक एक करके कितनी सारी वैलेंसीज के बारे में बता दिया और कितने सारे आयंस के बारे में बता दिया, इनको तो याद करना भी मुश्किल है। बट बिलीव मी, हम लोग कितना प्रैक्टिस करेंगे कि आपको ये सब बहुत ईजी लगने वाला है, ठीक है? तो बिल्कुल नहीं घबराना है कि ये बहुत सारे हो गए हैं, कुछ भी बहुत सारे नहीं है। जब हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री तो ये सब हमारे लिए ईजी होने वाला है। Now the last part is writing the chemical formulae. So many a times in chemistry you would be given chemical name or a common name, so you should know how to write their formulas. Say suppose you are given the chemical name aluminium oxide. Now until and unless you don't know the symbols of aluminium and oxide, you won't be able to solve it. So first step will be to write the symbols. So you are writing aluminium as Al and oxide is O. Okay, now we know that sequence, right? Ha, He, Li, Bi, Baknov. So it is Ha, He, Li, Bi, Baknov, Nina, Meg, Al, Sai, Pas, Kal, Ar, Ke, Ka. अब क्या करना है आपको, जब आप एग्जाम्स दे रहे हो सबसे पहले ये सीक्वेंस लिख लो और यहाँ पे काउंटिंग लिख लो। उससे क्या होगा कि कभी भी आपको ना कोई प्रॉब्लम हो तो आप चेक कर सकेंगे इनके एटॉमिक नंबर है क्या। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ एल्यूमिनियम की तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है 13। इट मीन्स इस पे चार्ज कितना होगा +3। एंड ऑक्साइड हमने पहले ही बोल रखा है इट इज -2। तो अब क्या करते हैं, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al की मल्टीप्लिकेशन होगी 2 से एंड O की मल्टीप्लिकेशन होगी 3 से। तो हमारा फॉर्मूला कितना निकल के आएगा Al2O3। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेरियम सल्फेट। सो बेरियम सल्फेट बहुत ज्यादा यूज कर रखा है पूरी केमिस्ट्री में, तो इसलिए इसको हम देखते हैं अभी। सो बेरियम कितना होता है, Ba is +2, सल्फेट SO4 कितना होता है -2, अभी हमने देखा था। अभी क्योंकि ये दो सेम है तो इसलिए क्या होगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे और फॉर्मूला आएगा BaSO4। अब नेक्स्ट एक और देखते हैं फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, अब कैल्शियम सपोज हमें कैल्शियम में सीक्वेंस से याद है तो हम इस सीक्वेंस को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। 16 के बाद फिर ये 17, 18, 19 एंड 20। सो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी बढ़ी थी हमने 2। सो इसका क्या होगा, Ca is the symbol for calcium and it will be +2, carbonate is CO3 and इसका क्या था -2। ये कैंसल आउट कर जाएंगे तो कितना आएगा CaCO3। तो ये मैंने आपको बताया है कि कैसे हम केमिकल फॉर्मूलेस बनाते हैं। ऐसे करके आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो अगर आपको वैलेंसीज पता है या फिर चार्जेस पता है, ठीक है। अब हम दो और डिस्कस करते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि है फेरस सल्फेट। ओके, अब क्या है फेरस, आयरन की जब 2 वैलेंसी होती है तो उसका नाम होता है फेरस। ओके, सो इट मीन्स इसमें आयरन की वैलेंसी कितनी है +2 और सल्फेट कितना होता है SO4 -2। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला कितना आएगा FeSO4। नाउ लेट अस कंसीडर द लास्ट फॉर्मूला हियर।
सो सपोज हम देखते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। आप एक बात बताइए, क्यूप्रस क्या है? बेसिकली कॉपर से रिलेटेड है। अस मीन्स इसके लोअर वैलेंसी की बात कर रहे हैं। तो लोअर वैलेंसी ऑफ कॉपर कितनी होती है? +1। सो इट इज Cu+1 एंड ऑक्साइड इज -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो Cu की मल्टीप्लीकेशन 2 से होगी और O की 1 से। तो हमारा फॉर्मूला कितना आएगा? Cu2O। ऐसे करके आप किसी के भी फॉर्मूलेस बना सकते हो, बस इनकी वैलेंसीज याद रखिएगा। ओके? I hope you have understood the concept class 2. Now we'll be meeting you soon in the concept class 3, where we will be understanding about reactivity series. With this note, bye bye and take care of yourself.